अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक़ास अहमद आर्ट्स चैनल। नाज़रीन, स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लासेस चल रही हैं। पहली क्लासेस में हमने ड्राइंग बनाना सीखा, तो आज से हम कलर्स को समझेंगे। जो भी ड्राइंग हमने बनाई है इसे कलरफुल कैसे किया जाए। तो नाज़रीन, ड्राइंग को कलरफुल बनाने के लिए सबसे पहले कलर मिक्सिंग को समझना होगा। कलर मिक्सिंग के लिए हम पोस्टर कलर यूज़ करेंगे। कलर मिक्सिंग के लिए हम बेसिक 5 कलर यूज़ करेंगे। प्राइमरी कलर जिनमें सिग्नल रेड, रॉयल ब्लू, लेमन येलो, वाइट और ब्लैक शामिल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाज़रीन, कलर मिक्सिंग के लिए आप ये शीशे का पीस इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नीचे मैंने ये वाइट चार्ट पेपर रखा है ताकि कलर्स आसानी से नज़र आ सके। कलर मिक्सिंग के लिए मार्केट से कलर मिक्सिंग पैलेट मिल जाते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर शीशे का पीस इस्तेमाल करता हूँ, क्यों ना कि इसे साफ़ करना बहुत आसान होता है। अगर आप वाटर बेस्ड कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे पानी से साफ़ कर सकते हैं, और अगर आयल कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे मिट्टी के आयल या थिनर से साफ़ कर सकते हैं। आप इसे स्क्रैपर या नाइफ़ की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। कलर मिक्सिंग के लिए ये बहुत बेस्ट पैलेट है। नाजरीन, आज की क्लास बहुत अहम है, तवज्जो से आपने बात समझनी है कि जो भी पेंटिंग हम बनाते हैं इसमें बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल होते हैं, तो आपको कलर्स बनाने आने चाहिए। यानी 2 कलर्स को मिलाकर तीसरा कलर, 3 कलर्स को मिलाकर चौथा कलर और 4 कलर्स को मिलाकर 5वां कलर बनाना आना चाहिए। अब ये कोई बात याद करने वाली नहीं है, बस आप इन्हें मिक्स करें और इनसे खेलें। आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी कि किन कलर्स को मिलाकर कौन सा कलर बनेगा। जिस तरह आज की क्लास में हम 5 कलर्स से बहुत सारे कलर्स बनाएंगे, इसी तरह आपने भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। बस इसमें आपने मिकदार का हिसाब रखना है कि किस कलर को ज़्यादा मिकदार में लिया जाए और किसको कम मिकदार में लिया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लाइट ग्रीन कलर बनाएंगे। तो ग्रीन कलर बनाने के लिए हम ये थोड़ा सा येलो कलर उठा लेंगे। इसके बाद हम 1-2 डॉट ब्लू कलर के उठाएंगे और आप देखें कि इन्हें मिक्स करने से ये ग्रीन कलर बन गया है। अगर मज़ीद आप इसे लाइट करना चाहते हैं तो इसमें येलो कलर और ऐड कर लें, तो ये पैरेट कलर बन जाएगा। अगर हम इसमें मज़ीद वाइट कलर ऐड करेंगे तो ये लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा। इसी तरह आपने ये सारे कलर्स बनाते जाना है।